Welcome back here with us on Urban Debate on Mirror Now. The battle for Uttar Pradesh has now moved to the 6th phase. Polling for the 6th phase will be held on 3rd of March. That's tomorrow. Let's straight away go across to my colleague Archana, joining us live this evening to help us understand how many seats are up for grabs this time in this very crucial phase. Archana, over to you. Good evening, Heena. It is a very, very crucial phase. A lot of people say that it is the ultimate battle royale of Uttar Pradesh, phase 6 and 7. I'll tell you why it's crucial. So the most important aspect of this phase is that the UP elections have now moved to Purwanchal, which is eastern Uttar Pradesh. And the biggest highlight of this phase is that UP Chief Minister Yogi Adityanath is going to make his debut as far as assembly elections are concerned. So polling is going to take place in 57 seats across 10 districts. 676 candidates are in the fray and over 2.4 crore voters are eligible to vote. Now the key seats that are going to polls today, as I said, Gorakhpur is a very important seat. Then other districts are Balrampur, Siddharth Nagar, Maharajganj, Kushinagar, Basti, Sant Kabir Nagar, Ambedkar Nagar, Deoria and Balia. Now last time around in 2017, BJP had won 46 of the 57 seats in this phase. Now, another important aspect about this phase is that the BSP could prove to be a kingmaker here, because this is essentially a phase that has a lot of seats with the scheduled caste voters, Ambedkar Nagar, Siddharth Nagar. So this is where the BSP, the Bahujan Samaj Party, falls into the picture. They play a very crucial role, which is why in the past we've seen Amit Shah praising or sort of trying to praise Mayawati, which is quite rare in Indian politics, and we haven't seen that happen between the two parties yet. Another important aspect, and as I said in the beginning, that this is UP Chief Minister Yogi Adityanath's seat, Gorakhpur. This is the first time he's contesting an assembly election. He's been an MP from Gorakhpur, but this is the first time he's fighting an election. He's fighting an assembly election, and giving him a direct fight is Bhim Army's Chief Chandrasekhar Ravan, who has decided to challenge Yogi Adityanath head-on, and the fate of 7 ministers who are in the Yogi cabinet is also going to be decided tomorrow. Heena. All right. Thank you very much, Archana, for the moment, for joining us and helping us understand the importance of this phase of current elections in the state of Uttar Pradesh. Let's also now focus a little bit more on Gorakhpur, which is UP Chief Minister's stronghold. That's going to see voting in the 6th phase tomorrow. Chief Minister is contesting his first assembly election, as Archana was telling us just now, from the Gorakhpur Sadar constituency. He represented Gorakhpur Lok Sabha seat until 2017, when he was chosen as the UP Chief Minister after BJP's landslide victory in the state elections. And here's what the people of this area are seeking as far as this phase is concerned. Here's a report sent by my colleague Alok. 4-5 से कोई बदलाव ऐसा नहीं, जो अपना काम करते हैं खाते हैं लोग। इस बेरोजगारी पड़ी हुई है, नौकरी चाकरी नहीं मिला। कौन ज्यादा हावी करने वाला है? और यहाँ पे देखिए 2 में लड़ाई चल रही है, कमल का फूल और साइकिल है। साइकिल, यही दो ही लड़ाई है, बाकी लड़ाई है। लड़ाई है, कुछ नहीं, रोजगार है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कैसे नहीं है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो योगी जी का गढ़ है। ये तो योगी गढ़ है, लेकिन कुछ नहीं है। रोजगार है, कोई रोजगार नहीं। इसकी बात करते हैं योगी जी, विकास कुछ नहीं है। विकास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है अब योगी जी, अब कितना किसानों का पैसा बाकी है, गन्ना मिल का पैसा बाकी है, वो कर्मचारियों का पैसा बाकी है, अभी पैसा दिया ही नहीं सरकार। अच्छा, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कितने लोग जो पड़े हैं। So this is what the voters mood here, especially in चौरी चौरा। पूछते हैं लोगों से, बात करते हैं। यहाँ पर चाय की दुकान पर आप चुस्की ले रहे हैं। कल गोरखपुर वोट डालने जा रहा है, आप भी यहाँ पर वोट डालेंगे। क्या कुछ मुद्दे आप लेकर यहाँ पर वोटिंग करने जाएंगे? कल मैं जाऊंगा तो पहली बात तो मैं जॉब के लिए जाऊंगा, कि सरकार आए, कोई भी सरकार आए, जॉब दे, और बस यही मैं कहूँगा। ये रोजगार, युवाओं के लिए बस रोजगार चाहिए, बाकी सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, गोरखपुर में पिछले 5 सालों में क्या बदलाव देखा है जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ से चीफ मिनिस्टर बन गए? सब कुछ रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ सही है, और मतलब जो भी है अखिलेश से बेहतर ही है, योगी से। अखिलेश से बेहतर नजर आ रहे हैं आप।
कि क्या मुद्दे हैं, अगर आप बताएं। आप कल वोट देंगे यहाँ पर? जी जी। तो वोट देंगे तो क्या दिमाग में रहेगा आपके? भैया रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। जी, रोजगार इससे बढ़िया है। तो Let's now shift our focus back to the latest about the situation in Ukraine. Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia is addressing the media. Let's listen in. Both at Siret on the border and at Bucharest. We then had a meeting with all the diaspora in Bucharest, and I must thank all our Pravasi Bhartiyas, our companies, and all our individual citizens who are making all kinds of arrangements for our students, from transport to shelter homes to even cooking for them and feeding them. With them, I outlined a strategy for setting up a call center to be able to give a unique code for every student until his or her transfer back to India. And we are planning that that docket for every student should be transmitted to the MEA. And from MEA, they can be transmitted to each that when they come to pick them up at the airport, they know exactly who to pick up from every flight. So we are correlating every student with every state and with every aircraft. Alongside that, we are also arranging medical facilities because some of our students have had injuries, some of them have had surgeries, not related to the transfer from Ukraine to here. But whilst they were in college, they've had certain accidents and certain injuries, but those are still plaguing them. So to make sure that medical attention is given for those issues. For example, today on a flight, I had two girls who I met last night. Shrishti is one of them, and another girl who's had a knee ligament tear, and the other who's had a calf ligament tear. So to be able to look after them properly, I've put them in the first two seats of the aircraft and made sure that we have arrangement for medicines for them. Along with that, in another 10 minutes, the C-17 Globemaster is landing from India of the IAF with relief materials. So we're going to hand over that relief materials to the Romanian authorities for the shelter homes in Romania, as well as some into Ukraine. And finally, I'm going to, after this, visit all the shelter camps in Bucharest. Tomorrow morning, I leave for the border. So I'm going to Siret tomorrow morning, and I will be camping at the border for the next 48 hours to ensure that our 1,000 students at the border are also sent home in a safe manner. So today we have 3,000 students here, of which 1,300 are leaving today. I am also looking at the nearest airfield near Siret, which is the border post called Suceava. And from Suceava, we are arranging tomorrow 2 aircraft from India, Indigo aircraft flying in directly to Suceava. And each aircraft will take 220 students. That means 440 students will be directly airlifted from Siret, close to Siret, from Suceava airport. So they don't have to make the long journey of 6.5 hours from Siret to Bucharest. Similarly, day after, we are getting 4 flights to land directly at Suceava, next to the border town. So between these 2 days, we'll have 6 flights with a capacity of 220 aircraft, 220 people, which means 1,300 people will be evacuated directly from the border point of Siret, as opposed to being evacuated from Bucharest. So that will take care of the number of students that are in the border town of Siret as on date at this point of time. As far as Bucharest is concerned, as I mentioned, out of the 3,000, 1,200 are leaving today. That leaves us with a balance of 1,800 students in Bucharest. I have 6 flights coming in tomorrow into Bucharest and 6 flights coming in day after. 12 flights, again with a load of roughly...
So that was the Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, who currently is in Bucharest in Romania, and was telling us about how the situation is right now. Important update he gave to us. 3,000 students were there. 1,300 are leaving today. C-17 Globemaster has already landed with all the relief material that will be given to Romanian authorities. Apart from this, now students are going to be airlifted. That's the indication he gave to us, and will be evacuated, in fact, from the border area itself, so that they do not have to travel to Bucharest from Siret specifically. Important information there. More flights are expected in the next 24 hours to evacuate people from the neighboring countries of Ukraine. We'll keep you ahead on the story, but let's now shift our focus back to what we were telling you earlier, and that was about the election season that's also going on here in India. An important phase is there in UP tomorrow. Voting will happen. That is phase 6, and let's tell you what the people in Gorakhpur are really looking forward to. Every year, BRD Medical College of Gorakhpur reports death of children due to a disease. Moreover, in 2017, this hospital had also seen the death of 63 children due to lack of oxygen supply. While the Chief Minister has repeatedly praised his government over COVID management, there were many allegations of acute oxygen shortage. Mirror Now's Alok spoke to the people to know about the medical facilities here and what their issues are going to be when they go out to vote tomorrow. एक नंबर की सुविधा मिल रही है। अच्छा, कोई कमी नहीं है। बस थोड़ा सा कमी क्या है, कुछ डॉक्टर अगर बढ़ जाएं तो कुछ कमियों को दूर किया जा सकता है। सबको सारी सुविधा सरकार के द्वारा मिल रही है। आयुष्मान कार्ड जो है थोड़ा ये 5 लाख का जो है सुविधा जो मोदी जी ने दिया है, ये अगर थोड़ा गोरखपुर में और थोड़ा गरीबी क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत से लोग जो है दवा बिना परेशान है, पैसे बिना परेशान है। तो ये आयुष्मान कार्ड अगर हमें मिल जाए तो हम कुछ अपनी अच्छी इलाज कर लें, महंगा इलाज कर लें, जो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है थोड़ी? हाँ सर, इलाज सही तो मिलता है, मगर जैसे कि दवा हम लोग लेने आते हैं, दिखाएं, अंदर में दवा दिखाने के लिए गए हैं कि बोले हैं कि बाहर से ये दवा ले लीजिए, यहाँ पे नहीं है। अच्छा। फिर हम गए अंदर, हम बोले 1 मिनट रुक जाइए, हम पहले पर्ची दिखा ले, अगर होगी तो लेंगे, नहीं तो फिर बाहर ही लेंगे। तो दिखाए तो वो बोला कि नहीं, ये 2 दवा यहाँ मिल जाएगी। तो इसके मतलब दवा है, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। तो ये भी एक आपको लगता है कि दवा है लेकिन झूठ बोलते हैं? हाँ। देते किस पे वो दवाई? तो अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, ये तो हम नहीं जाने। नहीं, पहले से सुधार है, पहले सुधार है। अभी सर इलेक्शन हो रहा है, आप लोग क्या सरकार से डिमांड करेंगे, मांग क्या करेंगे सरकार? अब मांग कोई क्या होता है, रोड अच्छा हो, लाइट रेगुलर मिले, स्वास्थ्य विभाग बढ़िया हो जाए, और क्या करना हमको, ये सब चाहिए ना हमको। स्वास्थ्य विभाग, जो सरकार, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहे, हो जाए, उसमें बेहतर हो जाए, और बेड यहाँ पर और बढ़ाने की जरूरत है। बेड और बढ़ा दे, और फैसिलिटी लोगों को मिले, आराम से दवा मिल जाए अंदर से। आधी दवाई मिलती है, आधी नहीं मिल पाती इस समय। अस्पताल की सुविधा और अच्छी हो जाए। हाँ, और यहाँ पे जैसे भीड़ कोई सिस्टम नहीं लगता है, जैसे जहाँ देखिए तहाँ भीड़, तो थोड़ा सा कि इसको बढ़िया से करके सिस्टमेटिक अभी भी नहीं है। सिस्टमेटिक बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ। तो एक अकेला यही हॉस्पिटल है क्या यहाँ? अभी इधर तो मान लीजिए पूर्वांचल साइड में तो मेडिकल कॉलेज जो गोरखपुर का यही ज़्यादा मतलब अभी चल रहा है। अभी तो नया मान लीजिए देवरिया अभी खुला है, अभी बढ़िया से रन नहीं किया है। अच्छा। यहाँ बिहार तक के पेशेंट आते हैं, यहाँ बिहार तक के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। तो आपको लगता है कि और बेड हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। बाकी सब जगह से तो ठीक है अभी व्यवस्था, लेकिन कुछ और सुधार की जरूरत है यहाँ पे। क्या जैसे मैं अभी आया स्टैंड में, एक तो स्टैंड बड़ा महंगा है यहाँ पे। अच्छा। भीड़ ऊपर से रहती है, गाड़ी फंस गई तो घंटों लग जाते हैं, जिनकी गाड़ी फंस गई उनको निकालने में। सिटी में जो है जाम की समस्या आसपास बहुत जबरदस्त। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में खुद स्टैंड के जाम की बहुत बड़ी समस्या है, और सिटी जाम की समस्या तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत समस्या है यहाँ पे। अच्छा, तो ये कभी बदलाव नहीं आया इस चीज़ का? अभी तो फिलहाल नहीं आया। And Varanasi, the Lok Sabha seat of Prime Minister Modi, is also going to be an important seat to watch out for in the phase tomorrow. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee will be campaigning for Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav tomorrow. Times Network's Akash Watt spoke to the students of BHU about their issues. Listen in. इस बार छात्रों के मुद्दे क्या हैं? छात्रों के मुद्दे तो हमेशा से ही शिक्षा, स्वास्थ्य और देश की सुरक्षा, चूँकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हम सभी छात्र हैं तो देश की सुरक्षा को भी लेकर के चीज़ों को सोचते हैं। तो हम सभी तो इन्हीं मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, और बाकी जितने लोग वोट कर रहे हैं वो भी इन्हीं मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें कुछ खामियां नज़र आ रही होंगी, कुछ लोगों को इसमें अच्छाई नज़र आ रही होगी। जब विषय आगे बढ़ेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे, तो आपस में पता चलेगा कौन किसके पक्ष में है और सरकार किसकी तरफ दिख रही है। रोजगार मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है, रोजगार से बड़ा मुद्दा हो ही नहीं है। और आप विश्वविद्यालय के प्रांगण में आके और रोजगार की बात करेंगे
रोजगार तो इतना बड़ा मुद्दा है कि 5 साल से जो भी पद भरे गए हैं उसमें से बहुत सारी भर्तियां क्या हो गई हैं कि धांधली के कारण पकड़ी गई हैं। टेट का मामला उठा लीजिए, इतना बड़े पैमाने पर उसका वहाँ पकड़ा गया। आप एलटी का मामला उठा लीजिए, वहाँ जेल भी चली गई, बनारस से पकड़ी गई, लेकिन वो नौकरी कर दी गई। क्या मतलब है? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बेरोजगारी, और हमारे स्टूडेंटों के सबके लिए बेरोजगारी का मुद्दा है। तो बेरोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो छात्र जो है कहीं ना कहीं जो रोजगार थी उसके लिए मतलब असहमतियाँ थी छात्रों की, और दूसरी चीज़ है कि जो NEP आया है उससे छात्र जो है उत्साहित हैं। तो एक नेगेटिव भी है, एक पॉजिटिव भी है। छात्रों के बीच तो यही बात है कि जो छात्रों का मुद्दा है इसमें राजनीति से गायब होता जा रहा है। जो छात्रों के मेन आम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जिससे सब छात्र परेशान होते हैं। जैसे कि जब ग्रामीण छात्र आता है कहीं तैयारी करने के लिए या रहने के लिए, तो महंगाई उसके लिए बहुत, जो सिलेंडर पहले एक किलो 290 रुपये में 80 रुपये में भरा जाता है, 120-130 रुपये kg भरे जा रहे हैं। और जो आर्थिक स्थिति जो डमाडोल हो रही है, छात्र को हर चीज़ खरीदने के लिए महंगे जो दिक्कतें आ रही हैं, उससे छात्रों को बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िले में जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ छात्रों से बात करेंगे, तो उन छात्रों के बीच जो एक सबसे बड़ी बात है वो रोजगार को लेकर चर्चा है। So those were the issues of people in Banaras, in the university, the students there. Varanasi will see voting during the 7th phase, and tomorrow the focus is going to be on other constituencies. That's going to be phase 6. We'll of course be keeping you ahead on this story this election season as well. With this, it's a wrap. Thank you very much for staying with us here on Urban Debate on Mirror Now.